Yes, very good morning, my dear friends. Guys, good morning. Right, come on. So, friends, we are dealing with the topic of deductions and return of income. That two areas we covered in the previous class. Now, we are just left with little bit part of discussion in TDS and a little bit to talk about TCS. With that, we can complete our syllabus and the effort what we have taken since last so many days. Yes, guys? Wonderful. First, let's complete the balance, then we can do all that. Okay? Are we ready, my dear friends? Everybody's good. Come on, quickly tell the answers, then we'll start. Tell me, guys, what is section 139.1? Due date of return of income and who is supposed to pay return of income? 139.3. Return of loss. 139.4. Belated return. 139.5. 139.9. Defective return. 139.8A. Updated return. Very important concept, my dear friends. And if you file within 12 months from the end of assessment year, कितना है? 25% of tax payable. After 12, before 24, 50%. After 24, कुछ भी नहीं हो सकता है. Good. 139A, PAN, 139AA, Aadhaar, 234A, interest for delay filing of return of income. 234F, late fees. कितना है late fees? 5,000. And if total income does not exceed 5 lakhs, कितना बेटा? 1,000. याद है ना? Next. 234H. Late fee for delayed linking of Aadhaar with PAN. कितना late fees? 500 up to 30th June 2022. After that? 1,000. Good. ATC. क्या क्या है इसमें? बहुत सारे हैं, ठीक है, 5 बोलो. Life insurance. Provident fund, interest क्या interest nonsense, principal amount of housing loan, सुकन्या समृद्धि scheme, bonds of NABARD. सुकन्या समृद्धि कैसे बोलते हैं यार? NABARD. हाँ, सब मिलके कितना लिमिट? 1,50,000. Tuition fees for full time education for 2 children. क्या हुआ इसको? अच्छा, tuition fees for full time education for 2 children. Very good. Next, CCC, LIC pension fund, कितना लिमिट? 1.5 lakh. CCD 1 beta. Employee contribution to pension scheme of central government. First will separate 50,000 under CCD 1B and the balance will restrict it to 10% of salary. और वापस ये तीनों मिलके अपने को क्यूट बना दिए ये लोग. ADCCE. Next, what is ADCCD 2? Employer contribution pensions for central government. Good. Limit कितना है? हाँ, वंडरफुल. 14% पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. वेरी गुड. ऐसा आंसर बोलता है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं. आंसर नहीं बोलता, सिर्फ टाइम पास करता. तो अभी तक बहुत सुनता था मेरे से. ATD, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. कैटेगरी क्या बेटा? सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन. चिल्ड्रन शुड बी डिपेंडेंट. तीनों मिलकर 25,000. एनीवन सीनियर 50,000. पेरेंट्स 25,000. नीड नॉट बी डिपेंडेंट. एनीवन सीनियर 50,000. प्रिवेंटिव चेकअप लिमिट मैक्सिमम 5,000. For both together, and the 5,000 is within the overall limits. Good. ATDD, dependent disability 75,000 and severe disability 1,25,000. Oh, flat deduction. ATU is what? Self disability. ATDDB, medical treatment for specified diseases. Amount what you have spent or 40,000, whichever is lower. Senior citizen, amount what you have spent or 1 lakh, whichever is lower. Then ATE, interest on loan taken for higher education. BCom also, after 12th. कितने साल? Current year plus 7 years, totally 8 years. Good. Deduction is only for interest. Next, ये बोलो बेटा, come on. ATEE, AA, WB. Yes, Aditya. EE किसका है? 16-17. Loan is what during 16-17? Sanction during 16-17. याद रख लो ये पॉइंट. बिकॉज डिस्बर्समेंट डेट देखना नहीं अपने को, सैंक्शन डेट देखना. वो क्वेश्चन याद था ना कल? सैंक्शन डेट पहले था, डिस्बर्समेंट बाद में था, उसमें नहीं मिलता था. अरे कल का एग्जाम्पल बात किया ना आपसे. हाँ, सैंक्शन बिटवीन 16-17. लोन डज नॉट एक्सीड 35 lakhs. प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 lakh. कितना मिला डिडक्शन? Interest of 50,000, whichever is lower. EE. Same story, 1490 to 31st March 22. And property value does not exceed
45 lakhs. Stamp duty does not exceed 45 lakhs. कितना deduction? Interest of 1.5 whichever is lower. समझ में आया ना बेटा? Everyone. And these two cases, loan is taken from bank or housing finance company. This case, bank or NBFC. Student is asking, housing finance नहीं है कैसा लास्ट में? अरे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, कॉमन सेंस की बात है. कितना डिडक्शन? 1.5 lakh और इंटरेस्ट whichever is lower. Loan taken between 31st March 23. Very good. 80F तो कुछ भी नहीं है. 80G donations and if it's more than 2,000 please pay by other than cash. कितने कैटेगरी इसमें? चार कैटेगरी क्या बेटा? 100% without qualifying limit, 50% without qualifying limit, 100% with qualifying limit, 50% with qualifying limit. How much is qualifying limit? 10% of adjusted total income. Adjusted total income मतलब क्या? Gross total income minus 112, 112A, 111A minus all deductions of chapter 6 except 80G. Then you divide. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Good. Prime Minister Drought Relief Fund कहाँ पे है? 50 without qualifying limit. National Sports Fund first में. Family planning 100% with qualifying limits. Temple fourth. Mosque, church, National Sports Fund, National Army Fund, Indira Gandhi Fund second. चार ही है उसमें सेकंड वाले में, याद है ना? Good. 80GG rent paid 5,000 per month, 25% of adjusted total income. Rent paid minus 10% of adjusted total income. 80GGA scientific research और rural development. सब पता है बेटा मैं आपको. GGB company to political party. GGC other than company to political party. QQB royalty on books. RRB royalty on patents. दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? रॉयल्टी और 3 लाख whichever is lower. और आपको मैंने बताया था बेटा QQB में लमसम में तो पूरा लेंगे, परसेंटेज है तो मैक्सिमम 15% इज ओनली एलिजिबल फॉर कैलकुलेटिंग डिडक्शन. एक क्वेश्चन बताया था आपको मैं. गुड. TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर नॉन सीनियर सिटीजन. कितना डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन 10,000 whichever is lower. 80 TTB फॉर सीनियर सिटीजन. कितना डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन 50,000 whichever is lower. But this covers savings bank, fixed deposit, any deposits. Correct, my dear friends? Everybody come on, please reply. Good. That is the story of this deduction sections and return of income sections. I think we got full clarity better. Everybody, sir, come on, quickly tell me now. House property sections कहाँ से कहाँ तक थे? 22 to 27. What is 22? Charitable section 23(1). Let out 23(2). Self-occupied 24A. Staggered deduction 24B. Interest on mortgage capital 25. Interest payable outside India is not allowed as deduction if tax is not deducted at source and there is no person in India who may be regarded as an agent. 25A. Arrears of rent and unrealized rent. 26. Co-ownership. 27. Now don't stop. Tell me what is section 28. Charitable section for PGBP. 29. Commutation. 30. Expenses related to building. 31. Repairs and insurance for plant, machinery and furniture. 32. 32(2). Unabsorbed depreciation. 35. Scientific research. 35 AD. Specified business. 35D. Preliminary expenses. 35 DD. Amalgamation or demerger. 35 DDA. VRS. 36. Other deductions. 37. 40 small a1. Payment to non-resident if TDS is not done or done but not paid before due date of return of income. क्या होगा बेटा? 100% is allowed. 40 small a1A. Payment to resident TDS not done or done but not paid before due date of return of income. क्या होगा बेटा? 30% is allowed. 40 small b. Interest salary payable by firm to the partner. याद है ना बेटा आप लोग? पूछा था ना आपने उस दिन? Interest salary 12%. Next 40 capital A2. Excess payment to relatives. 40 capital A3. Single person, single day. Come on. Single person, single day. Paying more than 10,000. Please pay only by account pay check, account pay draft, online transfer. If not, there is no question of deduction. And limit is not 10, limit is 35 in case payment is made to GTA, Goods Transport Agency. Simple. So clear na beta everybody? Yeah, beta 44AA. Maintenance of books of accounts. Professional का क्या सीन है?
When is professional required to maintain books of accounts? क्या 50 lakhs यार, कुछ भी 50 लाख पीछे पड़ा क्या यार, नॉनसेंस. आपको बुक में हाईलाइट भी कराया मैं. In all of the 3 years, any of the 3 years, gross receipts from profession exceeds 1,50,000 in all the 3 years. एग्जाम्पल में दिया था. एक साल में 180, एक साल में 110, एक साल में 160, एक साल में 150 के नीचे है यार. पढ़ाया था बेटा मैंने आपको. नेक्स्ट. एंड बिजनेस वाले में टोटल इनकम मोर देन 1.2 लाख और टर्नओवर मोर देन 10 lakhs. इंडिविजुअल एचयूएफ 2,50,000 और 25 lakhs. अरे एक चार्ट बना के दिया ना आपको बुक में. किसमें? बिजनेस में. हाँ, बिजनेस में नहीं आप 3 years. करेक्ट. सारे क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? कम ऑन गाइस, रिप्लाई. वो चार्ट बना है ना अपन उसका. नेक्स्ट 44AA हो गया. 44AB टैक्स ऑडिट. बिजनेस 1 crore, प्रोफेशनल, and the 1 crore will become 10 crores if cash payment does not exceed 5% of total payment and cash receipt does not exceed 5% of total receipt. Are we clear everybody? चलो 44AD. Presumptive income for what? Individual HUF firm carrying on business. कितना है presumptive income? It's applicable only when turnover does not exceed 2 crores. Presumptive income कितना है? 8%. And amount received by online transfer account paycheck 6%. 44ADA. Presumptive income for profession. क्या सीन है इसका? It apply only to that person who does not exceed 50 lakhs. कितना presumptive income? 50%. Can we show more? Yes. Can we show less? Yes. But if you want to show less, please maintain books of accounts and get them audited. Good. 44AE. Plying, hiring, leasing, goods carriage. क्या सीन है उसका? You should not have more than 10 vehicles anytime during previous year. Presumptive income कितना है? Other than heavy goods, 7,500 per month per vehicle. Heavy goods vehicle 1,000 per month, per ton, per vehicle. Good. 45(1). Charitable section for capital gains. 45(1)(e). Insurance compensation. 1B. ULIP. Insurance compensation we will tax only when compensation coming on account of only 4 cases. क्या है 4 cases बेटा बोलो? Flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake, or any other convulsion of nature. Second, accidental fire or explosion, riots or civil disturbance. Last one, action taken by an enemy or action taken in combating an enemy with or without declaration of war. Good. 45(2). 2A. Securities in demand form. Follow what method? FIFO. 3. Partner to firm. 4. Partner to firm book value, firm to partner market value. 45(5). Compulsory acquisition. 45(5)(a). Very important. Joint development agreement. Pay tax only when complete certificate is received, provided nothing is transferred before complete certificate. दोस्तों 47. Transaction which are not regarded as transfer. 48. Competition. 49. 1. Cost progression. Next one, if you don't tell, jump outside. 50. Please. 50A. Power sector units. SLM they are following. 50B beta. Slum sale. 50C. Stamp value for land and building. 50CA. Unquoted shares. Very good. 50D. If selling price is not ascertainable, fair market is deemed to be selling price. चलो exemptions क्या क्या सीखे थे अपन इसमें? 54. 54D, 54B. इस सेक्शंस में सिर्फ लॉन्ग टर्म किस किस में? एग्जैक्टली. These two are applicable for both long term and short term. 54B क्या है? नहीं भाई, एग्रीकल्चरल लैंड. डी वाला इंडस्ट्री वाला है. एग्रीकल्चर लैंड में कंडीशन क्या है? It must be used for agriculture purpose for at least 2 years prior to date of transfer by assessor or his parents. याद आ रहा ना बेटा? Done. चलो. So friends, these are the various important topics what we discussed, and we have spent a lot of time in the past days. Now it's finally time that we spend last little bit time pending on some parts of TDS pending, which we'll discuss and complete the job. Are we ready, everybody? All of us?
Employment of workmen. Bolta main, don't worry. So are we clear till this point, everybody? Friends, please reply. Sure, it is or no? So listen, please. So when I talk about this TDS, first and foremost important point, I gave a classic example to you already before. What is that, my dear friends? Expert is making payment to Shiva Teja. Assume for a second 10 lakh they paid. What is the first step expert is supposed to do? Do TDS. Under which section? 194J. At what percent they'll do? 10%. That's the first job. Correct, my dear friends? What is the second activity expert is supposed to do, my dear friends? Pay to the government. And to pay to the government, my dear friends, I repeat again, to pay to the government, the due date is 7th of next month. And in case of March, the due date is 30th April. Getting clarity, everybody? Friends, speak out. So what is the due date to pay the TDS to the government? 7th of next month. March case 30th April. And the third activity expert is supposed to do is, they have to file TDS returns. They have to file what, beta? TDS returns. Now let me tell you one important point here. That this TDS return are to be filed on quarterly basis. I repeat again. TDS returns are to be filed on what basis, sir? Quarterly basis. And for that purpose, we have got a form called 24Q in case of salary, 26Q other than salaries, 27Q payment to non-resident. चलो बेटा 24Q क्या है बेटा? Salaries. 26Q other than salary. 27Q payment to non-resident. Now when I say quarterly we have to file, what is the due date? For April to June quarter, the answer is 31st July. Q2, 31st October. Q3, 31st Jan. Q4, 30th April. Nonsense answer. 31st May. भाई जब पेमेंट का अप्रैल तक टाइम है तो रिटर्न को अप्रैल क्यों बोलेंगे भाई? जब पेमेंट का अप्रैल तक टाइम है तो रिटर्न को अप्रैल क्यों बोलेंगे? सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everybody, just 1 minute, don't write, just 1 minute. I'll close it off, then you can write. I'll wait for 2 minutes after that. समझ में आया क्या बेटा? सबसे पहले कम एक्सपर्ट को क्या करना है? TDS करना है. अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रेट है और ऑलरेडी अपन उसमें कम से कम 10 सेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपन. बस एक आधा सेक्शन बाकी है TDS में, हो जाएगा काम आसान से काम हो जाएगा अपना आज. ठीक है ना बेटा? बोलो. एवरीबॉडी गेटिंग क्लैरिटी? रिप्लाई बेटा. तो पहला काम क्या है? TDS करने का. सेकेंड, pay to the government. What is the due date to payment? 7th of next month. March 30th April. उसका बाद क्या काम है उनके एक्सपर्ट के पास? They have to file TDS return. TDS return का डेडलाइंस क्या है? Quarterly basis. 31st July. Quarter में next month 31st boss. July, October, Jan. Last quarter में टाइम कब तक है? May तक टाइम है. समझ में आ रहा है क्या बेटा? सबको क्लियर है ये पॉइंट्स? Everyone. Now I'll tell one point here. Listen very clearly. If TDS is not done, they have to pay interest at the rate of 1% per month or part thereof. That means if there is a delay of 1 month, 1 day, interest will come for 2 months. पता है ना अपने को ये मीनिंग पार्ट thereof का? Speak out, my dear friends. And if TDS is done but not paid to government, then the interest rate is 1.5% per month. और पार्ट thereof. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों बोलो. Come on, if TDS is not done, what is the interest rate? 1% per month or part thereof. If TDS is done but not paid to government, 1.5% per month or part thereof. Chalo guys, what activities expert has taken? First step, what did they take? Do the TDS. For example, when they pay to Shiva Teja, they will apply 194J. If they are paying salary to somebody, they'll apply 192. If they are paying commission, 194H. Lottery ticket commission, 194G. Insurance commission, 194D. If they are paying rent, 194I. If they are paying interest, 194A. If they are paying to contractor, 194C.
अलग अलग सेक्शन का अलग अलग लिमिट है, अलग अलग रेट से। समझ में आने इधर तक? पहले टीडीएस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? They'll pay the TDS to the government. कब तक पे करना है? 7th of next month. मार्च का कब तक है? 30th April. उसके बाद क्या करेंगे? क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल करेंगे। लास्ट एक्टिविटी that expert is supposed to do is they have to issue क्या बेटा? TDS सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों, आर वी क्लियर? फॉर दैट फॉर्म 16 in case of salaries, 16A others, and form 16 is given yearly once and 16A is given quarterly once. आपको दिख रहा है क्या बेटा? Everybody speak out, my dear friends. All of us, my dear friends. चलो, the chart of TDS is over. Tell me now, what the first step expert is supposed to do? Do TDS. अलग अलग सेक्शन का अलग अलग रेट है, थोड़े सेक्शन जो बच गए पेपर खत्म करेंगे। ठीक है ना? पहला काम क्या है उनके पास? टीडीएस करने का काम है। सेकंड क्या काम है? जो टीडीएस के गवर्नमेंट को पे करना है, पे करने का टाइम लिमिट क्या है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मार्च का कब तक टाइम है? 30th April। पे करने के बाद क्या काम है उनके पास? अब आई आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर उन्होंने टीडीएस पे कर दिए, रिटर्न फाइल नहीं किए, नुकसान किसको है? एग्जैक्टली शिवा तेजा को नुकसान है, बिकॉज रिटर्न फाइल लेकर तो मुझे क्रेडिट मिलता ही नहीं ना। बिकॉज प्रैक्टिकली समथिंग कॉल्ड फॉर्म 26 AS, उसमें क्रेडिट तभी दिखेगा अगर वो फाइल करेंगे तो। अगर उसमें क्रेडिट नहीं दिख रहा है, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं भाई तेरे को क्रेडिट नहीं देंगे हम। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, इफ एक्सपर्ट पेज टीडीएस दे डोंट फाइल रिटर्न, नुकसान तो मुझे ही होगा ना, उनको तो नुकसान नहीं होगा ना, तो उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा ना। तो उसने एक्ट में क्या किया? इफ यू डोंट फाइल टीडीएस रिटर्न्स ऑन टाइम, इफ यू डोंट फाइल TDS returns on time, they brought some section called 234E. 234E, late fees of, बहुत डेंजर है, 200 per day, 200 per day, and maximum is TDS amount. अरे ब्रैकेट में दिख रहा है क्या आपको? 200 per day, maximum is TDS amount. समझ में आ रहा है क्या? अगर 10 दिन का डिले करे 2000 फटका, मजाक नहीं है वो, बहुत डेंजर पॉइंट है वो। समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों, नाउ एक्सपर्ट विल बी वेरी कॉशियस टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स, नो। अब वो मेरे लिए नहीं, उनके लिए करेंगे अभी। आई एम जस्ट गिविंग एक्सपर्ट एग्जांपल सो दैट क्लैरिटी विल कम टू यू, बिकॉज दिस वेरी प्रैक्टिकल। गवर्नमेंट वांट्स टीडीएस बिकॉज उनको शेयर चाहिए स्टार्टिंग में ही, and they want to identify that transaction. The whole idea of TDS is make everybody accountable and make everybody responsible. Because the moment amount comes in cash, the moment TDS is not there, people are not interested to pay tax. Because in India, a lot of things happens only by force. कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर बोलते कि बॉस इंडिया में जिसको टैक्स पे करना है पे करो, सबके लिए सिर्फ स्टैंडर्ड एक रेट लगाएंगे 10%। लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर इंडिया में टैक्स रेट कम करे, बोल दिए सिर्फ 10%, आगे आएंगे सब लोग टैक्स भरने के लिए। एक बंदा भी आगे नहीं आएगा। 10% नहीं, 5% बोलेंगे तो भी आगे नहीं आएंगे। बोलने के लिए अपन 100 बातें बोलते। लॉट ऑफ क्लाइंट्स टेल मी टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड इंडिया में, अगर गवर्नमेंट बोलते कि 10% पे करो, इंडिया में टैक्स भरने वाले बढ़ जाएंगे ना सर? नहीं बढ़ते भाई। इंडिया में सबके लिए, कुछ गलत बात नहीं है, सबके लिए अपना अपना पैसा प्यारा है। And the point is, the problem with India is that we don't feel tax as a responsibility. I told this before also to you. We feel tax as an obligation. But fact to is, tax is a responsibility. But we don't take it as a responsibility. यार बेटा समझ में आ रहा है क्या आपको? Come on, please reply, my dear friends. चलो, come on, reply now. What are the first step they are supposed to do? When I say I'm not talking from expert, I'm talking from payer point of view. First step is what? Do TDS. Second step, pay to the government. Third step, file TDS return. उसके बाद क्या काम करना है? Issue TDS certificates. इसमें से हर एक्ट का अपना अपना स्टोरी है। अगर TDS नहीं किए तो भाई इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट को पे नहीं किए तो भाई इंटरेस्ट है, रिटर्न लेट फाइल करे तो भाई लेट फीस है। सर्टिफिकेट नहीं दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो क्रेडिट तो दिखता ही है उधर, बट एक्ट में वैसे पेनाल्टी तो है ही, 100 पर डे करके पेनाल्टी है, बट वो आपके सिलेबस पे नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट्स? टेक दिस चार्ट इन द बुक, कम ऑन। दिस इज अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ टीडीएस।
याद है कुछ ऐसे पढ़ाया था? 6 मार्क और है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, 4 मार्क 4 मार्क पर 4 पॉइंट पूछते, 4 मार्क को पूछ रहे, मतलब इस केस में टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, टीडीएस आएगा नहीं आएगा। और अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं हमेशा सैलरी इंपॉर्टेंट है, एचपी इंपॉर्टेंट है, क्लबिंग इंपॉर्टेंट है, टीडीएस क्या है देख लेंगे बाद में। भाई जितने मार्क्स उसमें से आ रहे हैं ना, उतना इसमें से भी आ रहा है। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे टॉपिक्स में से मार्क्स आते हैं। क्लबिंग से 4, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से 6 मार्क, और इसमें से 4, 14 मार्क्स तो इधर ही हो गए। यस वेदांत, यस पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, क्लियर? कौन सा बेटा? फॉर्म F24Q is not some restaurant nor a party please। हो गया लिखना, इतना बात कर रहे हैं आप लोग, चलो प्रोसीड। ठीक है, friends, are we clear with this, my dear friends? So please reply, come on. So what is the activity pair is supposed to do? First step, do TDS, then pay to the government, then file TDS returns. TDS returns have to be filed on what basis? Quarterly basis. Correct, my dear friends?
And after paying the TDS, what is the next job? Filing returns, then next job is issue the certificate. Are we clear till this stage? Everybody, my dear friends? Guys, please reply. Everyone? Good. Sir, there is a bank. Listen, please. They have a person, Mr. X. He has got fixed deposit with the bank. What is he having? Fixed deposit with the bank. And assume for a second, fixed deposit is 2 lakhs. Or let us say 20 lakh. And bank is paying interest at the rate of 8%. And X does not have any other income. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कितना आएगा 1.6 lakhs. And we all know that bank will do TDS under section 194A at the rate of 10%. Yes or no, sir? Speak out, my dear friends. Now, the interesting point is that what they told in the law is that X can submit a declaration. And this concept is only for interest and all, not for professional fees. Clear? No, this concept is only for interest, life insurance premium and all, not for professional fees. Shiva Teja cannot submit a declaration that मेरा income कम है TDS मत करो. ठीक है ना? Declaration in form 15G or 15H. सुने कभी? याद आ रहा कुछ सुना? 15H is for senior citizen. 15G is for non-senior. Is this certificate or a declaration? Declaration stating that, boss, my income is less than basic exemption limit. My tax payable is 0. Please don't do TDS. Who is giving that? Payee is given to the payer. So that TDS will not be done. Correct, my dear friends? Speak out. Take this, come on. इसका सेक्शन 197 है, बट ठीक है, जरूरत नहीं आपको. So are we clear with this, everybody? Speak out. So write one note. Sir, imagine there is a person who is a professional. His income is less than basic income limit. पर सामने वाला बोल रहा है TDS करेगा. वो दे सकता है क्या 15 से 15H? अरे एक बंदा है मिस्टर ए, हु इज ए प्रोफेशनल. इसका इनकम बेस कमीशन लिमिट के नीचे है. ठीक है ना? बट जो उसको पे कर रहा है वो बोल रहा है TDS करेगा. अभी 15 से 15H दे सकते क्या? नहीं. बट व्हाट ही कैन डू इज he can approach assessing officer for something called lower TDS certificate or no TDS certificate, stating that, sir, so and so person is making payment to me, please give certificate that TDS should not be done. But वो टाइम जाएगा ना. Today's money, tomorrow money is not the same, no?
ये प्रैक्टिकली लोग क्या करते, किस किस में करते मैं बताता हूं आपको. बेस का विषय नीचे वाले तो करते नहीं, बट आई टेल यू विच कंपनीज डू. इमेजिन देयर इज वन कंपनी ABC लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है. आई नॉट टेक एनी प्रैक्टिकल नेम, बट देयर इज अ बिग कंपनी कॉल्ड ABC लिमिटेड. ठीक है, इनका टर्नओवर 50 करोड़ है. ठीक है, एक्सपेंसेस 48 करोड़ से. ठीक है, प्रॉफिट कितना है? ये लोग टैक्स पे करेंगे, अज्यूम करो इस पे 35% सरचार्ज से सब ऐड करके, मतलब 70 लाख टैक्स पे करेंगे ना. समझ में आ रहा ना. बट जो पर्सन जो लोग पेयर जो है, जो इसको पे कर रहे, वो 10% टीडीएस कर रहे, क्योंकि ये प्रोफेशनल फीस है. मतलब 50 करोड़ पे 10% कितना होता भाई? 5 करोड़. अब बोल सकते रिफंड आएगा ना, ऐसा प्रॉब्लम क्या है? अरे रिफंड आएगा मतलब 70 लाख टैक्स पे बोले, 5 करोड़ टीडीएस है, तो 4.5 करोड़ रिफंड क्लेम करेगा यार ये, तो पैसे तो अटक गए ना. तो वैसे कंपनीज क्या करते, दे अप्रोच असेसिंग ऑफिसर एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लोअर टीडीएस और नो टीडीएस. समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी एंड ऑफिसर विल डिसाइड how much benefit to be given. Clear, my dear friends? Write note. In cases other than above, 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 comma, assessee can approach. In cases other than above, assessee can approach assessing officer. In cases other than above, assessee can approach assessing officer and file an application. And file an, what beta? Application for lower TDS. For lower TDS और नो टीडीएस सर्टिफिकेट. लेट मी टेल यू, आज तक एग्जाम में आया नहीं, बट मेरा पढ़ाने का इंटेंशन यही था कि स्टूडेंट को पता तो होना चाहिए. जो रेगुलर बैच पे तो ऑलरेडी उनको पढ़ा है वैसे तो, बट उनको याद ही नहीं है, मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली. ये एग्जाम में तो आज तक आया नहीं और 99.9% आएगा भी नहीं. ठीक है ना, बट ये जानना तो जरूरी है, उसके लिए पढ़ा है मैंने आपको. ये समझ में आ गया ना बेटा? एवरीबडी डन. चलो स्टार्ट. ओपन मटेरियल, प्रोसीड. आ जाओ. अच्छा, मटेरियल से पहले एक छोटी सी बात. सर, देयर इज एन एम्प्लॉयर हु इज पेइंग सैलरी टू व्हाट बेटा? एम्प्लॉय. अज्यूम करो सैलरी 10 लाख है, बट प्रॉब्लम क्या है? इवन तो 10 लाख सैलरी है, एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 1.5 लाख रुपए. तो एटीसी का रिडक्शन तो आएगा ना, बट एम्प्लॉयर तो टीडीएस 10 लाख पे कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन प्रैक्टिकली? टेल नो. Can't refund, yaar. Sir, today money, tomorrow money is not the same, yaar. Money blocked is as good as, money delayed is as good as opportunity cost is lost, boss. Costing में सीखे ना बहुत बार, opportunity cost. I'm sitting with you here means I'm not sitting somewhere. Correct बोला हमें. I'm sitting with you here means I'm not sitting somewhere. There's an opportunity cost for everything. समझ में आया क्या बेटा? Employee will intimate the employer the details of what? All deductions. तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? अच्छा बेटा तेरे को एलआईसी है क्या? तू प्रूफ दिखा. प्रूफ तो मांगेगा ना. एंड एक्ट क्लियरली टोल्ड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू चेक वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट. गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम दिमाग नहीं चलाएंगे भाई, एम्प्लॉयर तू चेक कर. गड़बड़ किया तेरे को परेशान करेंगे हम. गवर्नमेंट बोले तुम दोनों लड़ाई कर लो, मैं नहीं आऊंगा बीच पे. कुछ मेरे को आने का जाने का है बोलो, मैं आ जाऊंगा. जाने का तो नहीं आऊंगा, कुछ आने का है तो बोलो. It's clear, no? And what employer will do now? From 10 lakh, he will reduce 1.5 lakh. What is the balance? On this 8.5 lakh, he will calculate tax at normal rates. और जो फिगर आएगा उसको डिवाइड बाय 12 करके every month he will do TDS. Now tell me, if I ask you the question,
What is the TDS rate in case of salary? क्या आएगा आपका आंसर? What is the TDS rate in case of salary? What will be your answer? Normal slab rate. Or can I say TDS rate is equal to normal tax rate? अरे बराबर है ना? अब मुझे एक बात बोलो. When expert is making payment to Shiva Teja, what is the TDS expert is doing? What percent they are doing? 10%. Now can I tell 10% TDS is gone? I will not pay any more tax. 10% क्या? मेरा काम हो गया. Can I say that? No. Why? I have to pay as per my slab rate, no? And my income is more than 10 lakhs. I should pay 30% bracket also, I'm there. So when I calculate my tax, I'll reduce TDS what is gone. Balance I have to pay to the government, no? But इस सैलरी केस में ऐसा होता ही नहीं है. क्यों? उसका TDS ही जितना टैक्स है उतना TDS कर रहा है भाई. तो उसको जेब से वापस भरने का क्या सीन है? तो इसके सैलरी में प्रैक्टिकली लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं. कोई बंदा बोल रहा है मेरे को जॉब मिल गया, बोल रहा है मैंने को 1 लाख सैलरी है. अच्छी बात है. पूरा कटने के बाद कितना आता बोल. हाथ में कितना आ रहा है बता. बोलने के लिए इन हैंड, मतलब बोलने के लिए लाख रुपए सैलरी है, इन हैंड उसको आता महीने को 60-70 हजार, 30-35 तो ऐसे ही काट लेते ये लोग. क्योंकि जो पैकेज देते ना CTC 10 लाख, उसमें बोलते 1 लाख इंश्योरेंस है, 1 लाख मेडिकल है, बाकी 8 लाख बच गया. 8 लाख में 1 लाख ट्रैवलिंग फैसिलिटी है, बाकी 7 लाख में 1 लाख दूसरा फैसिलिटी है. 6 लाख रुपए बच गया. और 6 लाख में महीने को 50 हजार, और महीने को 50 हजार में 10 हजार TDS गया. हाथ में आएगा 40 हजार. पैकेज 10 लाख. बहुत डेंजर है. आप बोल सकते हैं अरे डिडक्शन ले सकते ना. क्या लेगा डिडक्शन? 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन. एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. प्रोफेशनल टैक्स फालतू का 2,500 रुपए. क्या है उसमें मिलने वाला उसको? द मोस्ट क्राइंग बेबी ऑफ इनकम टैक्स इज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. यू माइट टेल सर एम्प्लॉय TDS नहीं करे तो हो जाता ना. वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों चुप बैठेगा? उसको एम्प्लॉय पे प्यार थोड़ी है. नो लव एंड अफेक्शन, नथिंग, प्योर बिजनेस रिलेशनशिप. तू काम कर रहा है तू कर, नहीं करना तू निकल, किसी और को लाएंगे अपन. एम्प्लॉय है ना यार. सर समझ में आया क्या? बोलना बेटा. चलो प्लीज पुट साइड हेडिंग सेक्शन 192. आई विल टेल 2 पॉइंट्स राइट डाउन क्विक. विच सेक्शन? 192. 192 टाइटल क्या बेटा? TDS ऑन salaries. Right on. The rate of TDS is based on the rate of TDS is based on the rate of TDS is based on actual tax payable. Rate of TDS is based on actual tax payable by the employee. ये कितना बड़ा हेडेक है. आप अज्यूम करो सर. Take an example. There is a software company of let us say Wipro. There are thousands employees who are working. 1000 लोगों का सबका अलग अलग इनकम है, सबका अलग अलग डिडक्शन है. तो कितना बड़ा HR का काम रहेगा उसमें. मतलब इतने लोगों का प्रूफ्स कलेक्ट करो, इतने का सॉर्ट करो, चेक करो. दिस गाइस व्हाट दे डू इज दे ऑटोमेट द प्रोसेस. पूरा ऑटोमेट कर देते. उधर से डेटा कलेक्ट करो, इसका टैक्स निकालो, सब सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर लेते ताकि काम आसान होगा. बिकॉज मैन्युअली दिस मच वॉल्यूम कैन नॉट बी हैंडल्ड. And practically there are some companies who do only this activity of payroll management. मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं आपके पास बोलूंगा हमारा कंपनी का नाम है पेरोल मैनेजमेंट, मतलब आई डोंट वांट टू टेल कंपनी बट ADP करके 2-3 कंपनी है, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग कंपनी आर देयर. आई विल कम टू एंड टेल आप टेंशन मत लो. आपका HR का जो उतना भी काम है ना, सैलरी देने का, कितना TDS करने का, पे स्लिप देने का, पूरा काम आप हमको आउटसोर्स कर दो. ये और एक बड़ी कंपनी है जिसके पास 5-10 क्लाइंट, 10-15 क्लाइंट्स है, और मेरे पास 100 लोग काम कर रहे. 10-10 लोग एक कंपनी का संभालते. ये भी बहुत बड़ी कंपनी है. अरे समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा काम यार, मजाक नहीं है. चलो नेक्स्ट पॉइंट. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर. एक्चुअली CA लोगों को ये कंपनीज बहुत हायर करते. जो पेरोल मैनेजमेंट करते ना, वो कंपनी CA लोगों को बहुत हायर करते. एक्सपर्टीज रहेगा ना यार उन पर. और बीकॉम वाले को भी हायर करते, जूनियर लेवल पे लगा देते उसको. 15,000, 16,000, 18,000 सैलरी देकर रख देते उसको. जब 20,000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्या देंगे बीकॉम को? तय आता सिर्फ बीकॉम है तो. प्रोसीड. क्या लिखे? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू चेक
the proof. It is the responsibility of the employer to check the proof of deductions. It is the responsibility of the employer to check the proof of deductions. To check the proof of deductions submitted by the employee. To check the proof of deductions submitted by the employee. That's it. समझ में आना बेटा? सबको क्लियर है ये? चलो डायग्राम लिख लो नीचे, तुरंत लिखो फटाफट, क्विक. क्या था वो? कुछ तो था, हाँ लवकर. उतना ही बोला ना तू मेरे को, पहले उतना ही समझाया ना तू मेरे को, फिर क्यों ऐड कर रहा लास्ट में कुछ ना कुछ? अच्छा, लवकर लिया, ठीक है, जो भी है, राइट फास्ट. हाँ एग्जैक्टली. नो नो नो, इट साउंड्स लाइक प्यार कर दिया क्या, ऐसा लग रहा है. डिडक्शन के ऊपर क्या लिखा है? इंटीमेट. डिडक्शन के ऊपर क्या लिखा है? इंटीमेट. हाँ, इंटीमेट. यस नित्या, आर वी क्लियर? सैलरी के एडवांस टैक्स जरूरत नहीं होना पूरा. जब टीडीएस में गया तो एडवांस टैक्स बनने की जरूरत ही क्या है उसको? यू माइट आस्क, मतलब सैलरी पर्सन एडवांस टैक्स पे करता ही नहीं क्या सर? नहीं करता है, पर अगर टीडीएस नहीं कटा तो भरना पड़ता है उसको. एक्ट ने कभी नहीं बोला कि सैलरी पर्सन जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकली वो भरता नहीं एडवांस टैक्स, बिकॉज उसका जितना भी टैक्स है पूरा टीडीएस में चलेगा ना, तो एडवांस टैक्स क्यों भरना चाहिए उसको? एडवांस टैक्स लायबिलिटी कब आएगा? व्हेन द टैक्स पेएबल आफ्टर टीडीएस इज 10,000 और मोर. इसका तो पूरा टैक्स पेएबल टीडीएस में ही गया, तो ये क्यों भरेगा एडवांस टैक्स? समझा ना लॉजिक? अगर टीडीएस नहीं हुआ तो एडवांस टैक्स आएगा. आप पूछ सकते टीडीएस नहीं होने का पॉसिबिलिटी क्या है? क्यों? मतलब कंपनी नमूने हैं, उनको मालूम ही नहीं टीडीएस करने हैं, रहते थोड़े. एंड यू कैन नॉट टेल पीपल हाउ कैन दे बी इग्नोरेंट. दे आर इग्नोरेंट्स. एक क्लाइंट मिला था थोड़े दिन पहले मुझे, एक्चुअली जस्ट 2 महीने पहले, आने से पहले एक क्लाइंट मिला था. वो सैलरी देते जा रहे हैं एम्प्लॉयज को 50,000, लाख रुपए, 70,000, 80,000, और 1 रुपए का वो टीडीएस नहीं है. 1 रुपए का टीडीएस नहीं है लास्ट 8-10 महीने से. मैं आने के बाद पूरा फरवरी में पूरा झट टीडीएस करवा दिया, पूरा फरवरी मार्च में. एम्प्लॉय को हाथ में 5,000 सैलरी आया. हाँ, पूरा साल का एक साथ टीडीएस कट करे ना. अरे महीने कट करना चाहिए था ना. जो महीने कट नहीं किया फरवरी मार्च, मतलब आप बोल सकते थोड़ा थोड़ा करके कट कर सकते. थोड़ा कट किधर करूं मैं? बचा 3 महीना, दिसंबर में मेरे पास आया, जैन फिर मार्च में कट करना है, तो जितना सैलरी है, जितना टीडीएस है, आई हैव टू डिवाइड बाय 3 ओनली. नो, बचा 3 महीना ना यार. 60,000 टीडीएस कट के एक बंदे का. रोल ही एम्प्लॉयज कि ये क्या नॉनसेंस है करके. रोएंगे ना यार. लास्ट इतने महीने से 17,000 आ रहा है जेब में, अभी धन बोल के 10,000 आ रहा है. अब मेरे को ऐसा देख रहे थे गुस्से में, ये नमूना कहां से आया, हमारा पूरा टैक्स कम करा दिया. उनको मालूम नहीं ना यार, इग्नोरेंस है. वो सॉफ्टवेयर वाले, टेक वाले, उनको कुछ नहीं मालूम. प्रोग्राम दो, करेंगे काम कुछ अच्छे से. टेक वाले को आयु तो आता है, बराबर है ना. बट कंपनी को तो अपने को एडवांस बराबर देना चाहिए ना यार. तो समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? एक बंदा था उसमें, एक एम्प्लॉय था जिसके साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि महीने का लाख रुपए सैलरी एंड एनी टैक्स लायबिलिटी विल बी द हेडेक ऑफ द एम्प्लॉयर ओनली. इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एम्प्लॉयर बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे. मतलब कॉन्ट्रैक्ट सीटीसी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट टेक होम पैकेज पे था. मतलब एम्प्लॉय जब ज्वाइन किया, एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किए, एम्प्लॉय ने डायरेक्ट बोल दिया मेरे को लाख रुपए चाहिए, तुम टीडीएस करते हो जो क्या करते कर लो, मेरे को नेट 1 लाख में मेरे अकाउंट में आना. तो उसको रिवर्स ग्रॉस अप करके टैक्स पे करवाया कंपनी से. मतलब वी हैव टेकन 1 लाख एस आफ्टर टीडीएस. व्हाट इज द फिगर बिफोर टीडीएस, देन व्हाट इज द टीडीएस, उतना कंपनी जेब से पे करे. अरे टीडीएस तो करना ही पड़ेगा ना. मैंने बोला ये एम्प्लॉय का भी कट कर दो, सबका कट कर दो. कम एम्प्लॉयर बोला सर इसका कट नहीं कर सकते. मैं बोला क्यों नहीं कट कर सकते? कौन है वो इनकम टैक्स से बड़ा आदमी?
बोल रहे नहीं इनकम टैक्स बड़ा आदमी नहीं सर, हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नेट टेक होम पैकेज पे कॉन्ट्रैक्ट किया हम। बोला फिर तुम जेब से भरो। बोला जेब से भरना पड़ता है, कैसे कुछ नहीं कर सकते क्या? बोला कुछ भी नहीं कर सकते सर, भरो। अरे समझ में आया क्या? एवरीबॉडी डन। चलो डेल विद सेक्शन 192, दैट्स इट। चलो गेट बैक टू आवर मटेरियल, बैक टू आवर मटेरियल। पेज नंबर बेटा 122। Guys, stop talking. Who's that? Sakshi. I asked, who is that Sakshi? 192 is what? TDS on what बेटा? Salaries. सर समझ में आ रहा है क्या बेटा? और नीचे देखो, HR एग्जम्पशन देता है ना एम्प्लॉय, तो अगर एम्प्लॉय का रेंट जो उस पर रेंट पे कर रहा है, उसका अगर रेंट लाख रुपए के ऊपर है, उसको बताना पड़ेगा भाई किसको पे कर रहा है तू, उसका पैन क्या है बता। अरे बहुत फेक सब करते थे यार लोग इधर, टू मच ऑफ फेक यूज्ड टू हैपन वेयर एम्प्लॉय ही इज नॉट स्टेइंग इन रेंटेड हाउस, ही इज स्टेइंग इन ओन हाउस, बट ऐसे बोलता है मैं रेंट पे कर रहा हूं किसी को 20,000 महीने का, तो साल का 240 ना, किसको पे कर रहा है उसका पैन दे। इसका सोर्स क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले? सुनो, इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, अभी इज एम्प्लॉय, अभी is telling that he is paying rent, I will ask you what? Give the details, give the PAN of that person. Once you give that details to me, I will submit that to income tax department. Income tax is sending notice to that person whose PAN you gave, telling that abhi so and so person has given a statement that is paying rent to you. तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्यों नहीं दिखाया? समझे क्या बेटा? Ultimately that linking is happening boss. Income tax gets the source of information from various data. When Abhi is telling that he has paid rent to Vedant, Vedant को तो पूछेंगे ना हम, भाई किधर है तेरा रेंटल इनकम? उस क्रेडिट में रेंटल इनकम ही नहीं है, बना दिया हमको क्यूट। यार समझ में आ रहा ना बेटा? नेक्स्ट, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो बोल रहा है मैं ट्रिप जाके आया कश्मीर, दिखा प्रूफ। बोले नहीं नहीं हम गए। हाँ कैसे गए? हवा में गए क्या? एविडेंस ऑफ नॉट फोटो, एक्सपेंडिचर, फोटो की एडिटिंग करेंगे ग्रीन स्क्रीन लगा के। अरे भाई लीव ट्रैवल में सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट ही मिलता ना यार, पागल हो गए क्या? लीव ट्रैवल इज ओनली फॉर ट्रैवल कॉस्ट नो, कुछ तो टिकट तो रहना चाहिए ना यार। चलते गए तो एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है ना। अब तो मत बोल चलते जाते वक्त खाते खाना खाए, खाना खाने का मिलता ही नहीं ना, इट्स ओनली फॉर ट्रैवल कॉस्ट। तो चलते गए तो कुछ खर्चा ही नहीं है, तो नो एग्जम्पशन, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। चप्पल का खर्चा, अरे कुछ भी बोलता है यार। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी, दिस ऑल्सो विल आस्क, जिससे लोन लिए सर्टिफिकेट दिखा, प्रैक्टिकली बैंक सर्टिफिकेट दे आस्क, हाउसिंग लोन का जो सर्टिफिकेट पूछता है बैंक वाला देता है सर्टिफिकेट कि इस साल में इतना इंटरेस्ट पे करे करके। फाइनली डिडक्शन, एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। Friends, getting clarity everybody? Moving forward, 192A, withdrawal from what? Provident fund. This section will apply only when service is less than 5 years. Common sense point. क्यों? More than 5 years तो exempt है ना बेटा। चलो लिमिट कितना है इसमें? 50,000. And the rate is what? 10%. And if PAN is not given, they'll do at the rate of MMR. Maximum marginal rate. समझ में आएगा बेटा? Friends, speak out. 229C is MMR. रेट कैसा आया? 30% प्लस सरचार्ज 37% प्लस HEC 4%। क्या बेटा 30 प्लस 37 प्लस 4 71 आया क्या तेरे को? वंडरफुल, 71 आया ना बेटा? नहीं आ सकता है 71, अंजलि को कुछ भी आ सकता है। डन। एक्ट बदल देंगे। सर वी क्लियर दिस पॉइंट एवरीबॉडी? जब 193 इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन व्हाट माय डिफरेंस? सिक्योरिटीज। 194A क्या था? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 193 इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। लिमिट देखो बेटा 10%। सर and payer is a company in which public are substantially interested, it is paid by account paycheck and limit कितना है? Limit does not exceed 5,000.
So clear, my dear friends? And when interest is paid to LIC, GIC, no TDS. This point is important. Highlight that point. Sir, whatever money we pay to LIC, GIC, they will not keep that money idle. They will purchase shares, debentures, bonds and all, for which they get interest. So who's paying interest to LIC? They will not do TDS. And for 8% savings bonds issued to resident, interest payable does not exceed kitna beta? 10,000. Corporate bonds issued to a resident, interest payable on the bonds, which is in demat form and listed in recognized stock exchange in India. So getting clarity, everybody? Friends, reply. So what is section 192? TDS on salary. 182A. Withdrawal from RPF. If service is less than 5 years. But even though less than 5 years, still TDS will not come in one case. In case where it is due to ill health, not contraction, or business only stopped. And ill health doesn't mean cold, cough, fever and all. It should be something like he is not able to continue with that at all. Clear now, everybody? Next. 194 is what beta? Dividends. Very important section. Rate of TDS 10% and limit 5,000. So getting clarity? And note TDS when it is paid to LIC, GIC and all. Sir, whenever we pay to LIC, GIC, we don't do TDS. And moreover, when we pay rent and all to the government, they will also no TDS. For example, there is central government building, which I took on rent. That means I am paying rent to the government. Law is telling don't do TDS. अरे हमारा पैसा काट के हमको देता बोलता क्या यार? समझे क्या लॉजिक? नेक्स्ट 194A. चलो बोलो 192. 192A. Withdrawal from RPF. 193. 194 beta. Dividends. 194A. Interest other than interest on securities. 194B. Lotteries, cross puzzles, card games, except horse race. और next section है. याद है यार. 194BB horse race. दोनों केस में कॉमन पॉइंट क्या है? TDS is 30%. दोनों केस में लिमिट क्या है बेटा? 10,000. Now a question. Shiva Teja went to one. Let's say I went to one mall, Kumar Pacific Mall. They gave one small token telling, sir, you write your name and phone number. They were lucky dip. देखे ना बहुत बार. I wrote my name and phone number. I put that in lucky dip. And in lucky dip, Shiva Teja got a car. Example. Now tell me, when I get a car, how will I do TDS? इंजन रख के बॉडी देते क्या मुझे? टायर्स निकाल के बाकी देते? बहुत लिमिट यार. लिमिट नहीं. Exactly. They will first tell you give the amount, then we'll release the car. Or they will tell we will only bear that amount. गवर्नमेंट बोल रहा है भाई हमको मतलब नहीं है कि विनिंग्स काइंड में है कैश में है. काइंड में है तो बॉस पहले टीडीएस तो पे करो. ये पॉइंट अंडरलाइन करो. इफ द प्राइस इज इन काइंड, पेयर हैज टू कलेक्ट व्हाट? लायबिलिटी फॉर डिडक्शन फ्रॉम पे. समझे क्या बेटा? अगर कैश में है तो पॉइंट प्रॉब्लम तो है नहीं, टीडीएस करके ले लेंगे बाकी. Done. 194C. Contract. 194D. Insurance commission. Next 194DA beta. 194DA. Maturity of life insurance policy. I will tell two things. This section will come only when maturity amount is taxable. समझे क्या? Maturity amount is exempt in two cases. Number one, amount received on death. Amount received on death. Number two, premium payable does not exceed 20% or 10% or 15% of sum assured. Examples दिया था कल याद है? If premium payable does not exceed 10%, maturity amount is exempt. On or after 1/4/2012, before 2012, 20%, after 13 for disabled, 15%. So premium payable 10% से कम है भाई, maturity amount तो exempt ही है ना. अगर maturity amount exempt है तो TDS क्यों भाई? तो TDS कब आएगा? अगर maturity amount taxable है. समझे क्या? देखो, TDS tax deducted at the time of payment 5% TDS and no TDS if it is less than what? 1 lakh. And no TDS if maturity amount is what? Exempt. And TDS किस पे करेंगे? They will do only on income component. Maturity amount minus maturity amount. Let's say you got 30 lakh. Premium paid is 20 lakh. Net figure is only 10 lakhs. TDS will come only on
10 lakhs. समझे ना बेटा, क्लियर है ना? नेक्स्ट सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार आया ये. पेमेंट टू व्हाट? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन. फॉर एग्जाम्पल, देन अ क्रिकेट प्लेयर David Warner coming to India, playing one match in India, or he has acted in advertisement, Kingfisher ad, he's coming and telling, for which he's paid 10 lakhs. Law is telling, do TDS at the rate of 20.8%, 20% plus cess. And one point let me tell you, अभी सुनो बेटा ध्यान से, जब भी हम TDS sections की बात करते हैं सर, I repeat again, whenever we talk about TDS sections and we talk about non-resident, we will always add surcharge if applicable. सेस तो ऐड करेंगे ही करेंगे. जब एक्सपर्ट मुझे पे करते हैं ना सर, जब 10% ही TDS करेंगे, 10% पे फिर सेस ऐड नहीं करते ये लोग, सिर्फ 10% है. नहीं, लॉटरी नहीं है ये. दिस इज नॉट लॉटरी. दिस इज बेसिकली फॉर योर व्हाट यू कॉल पार्टिसिपेशन इन गेम्स. Yes, yes, yes. All those things will come. Or acting in advertisement. अरे मैन ऑफ द मैच विनिंग्स पे क्यों आएगा यार? वो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स. मैन ऑफ द मैच इज नॉट ए गेम, इट्स अ स्पोर्ट. वो कैजुअल इनकम थोड़ी है यार वो. कम ऑन. नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंड व्हाट सर? एंटरटेनर. एग्जांपल, लेट्स से one singer from foreign, let us say, he's coming to India and singing one song. अरे क्या नाम है उसका? Justin Bieber, he's coming to India and singing one song, organizing one concert. अरे क्या हुआ यार? अरे he is very short actually. Height is short but very smart guy. सच ही बोल रहा मैं. नहीं, I didn't meet him any time. He has done a concert in Bombay recently. I mean, a year back, or 1.5 years back. Anyways, clear now everyone? Then, 194 EE, कभी आया नहीं आज तक एग्जाम में. TDS on deposits under what? National Savings Scheme. NSS, सुने ये word NSS? TDS rate कितना बेटा? 10%. And limit? Limit is 2,500 and the rate is 10%. And this provision is not applicable when the payment is made to what? I repeat again, this provision is not applicable when payment is made to legal heirs of the deceased depositor. Are we getting clarity, everyone? Come on guys, what is section 192? TDS on salary. 182A, withdrawal from RPF. 183, interest on securities. 194, dividend. 194A, interest other than interest on securities. 194B. 194B. Winnings from lotteries, crossword puzzles, card game, except horse race. BB. Horse race. 194C. Payment to contractors. 194D. Insurance commission. 194E. Sports person, associations, entertainer. EE. NSS. G. Commission on sale of lottery tickets. H. Any other commission or brokerage. I. Rent. IA. Immovable property 50 lakhs. 1% TDS. क्या हो बेटा? प्रोफेशनल टेक्निकल बोले क्या? So clear with that everybody? Next. IB देखो बेटा. This IB is also for rent. IB is also for, but it's applicable only for individual and HUF whose turnover does not exceed 1 crore or 50 lakh. That means who is not covered in 194I. अरे CJ के लिए M था ना, वैसे ही I के लिए IB है. But the TDS rate क्या है? 5%. And rent is exceeding what? 50,000 per month or part of the month. An important point is that, which I'll tell you here, is that generally we do TDS whenever payment is made. But in this section, there is no TDS monthly. सीधा year end पे TDS करो. सीधा कब TDS करो? मंथ करने की जरूरत नहीं है. Imagine महीने का 60,000 रेंट है, साल का 720 रेंट है. End of the year, on last month rent, do TDS.
on 720. 720 का 5% कितना है? 36,000, which will reduce from last month rent. Getting clarity? See that? Come on. Deduction is to be made at the time of credit of such rent for which month? For which month? Last month of the previous year or last month of tenancy. So getting clarity, everybody? Friends, come on, please reply, all of us. Everybody. Now I have a question. When expert is making payment to Shiva Teja, Shiva Teja does not have PAN. So expert TDS कितना करेंगे? TDS actual rate or 20%, whichever is higher. याद है ना, ये पॉइंट बोला था मैं. Next 194 IC क्या है बेटा? Joint Development Agreement. ऑलरेडी क्वेश्चन भी दिया था मैं बीच में आपको. Next 194J, very important. कितने पॉइंट्स है इसमें? 5 प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, non-compete fees, that remains other than salary. Every case limit is 30,000. Last case, no limit. Rate of TDS, 10%. Technical ka 2%. Very good. Are we fully clear with this? Everyone? Proceed next. 194K, income in respect of units, that is units of mutual fund. Mutual fund पे जो dividend वगैरह मिलता है. What is the rate of TDS? Limit 5,000. Clear है ना बेटा? Next 194 LA, important section came in exam on 2 times. That is compensation on acquisition of what? Immobile property. Rate of TDS is 10%. Limit is 2,50,000. Government has taken over the property for which they are giving compensation. उस पर TDS. Government does TDS and gives. गवर्नमेंट अपने को दे रहा है ना बेटा, अपन गवर्नमेंट को थोड़ी दे रहे. काट के देंगे. अरे यार कुछ भी यार. What happened beta? What is the discussion going on? What is the discussion going on? क्या डूटे बेटा? See, the whole story will come, this TDS and all will coming into picture when they're giving compensation. And not every state is doing like that. Some states, what they do is they directly give money only. Some states, they're not giving money, they're giving land at some other place. In that cases, they don't do TDS and all. Anyways, clear now everybody? Next, 194 M तो हो गया ना बेटा? Next section, very, very important. High probability a question may come in exam. ध्यान से देखो बेटा. 194N. Which section, my dear friends? 194N. TDS on what? Cash withdrawal. बात कर रहे थे अपन recently. चलो. सर ये पॉइंट देखो पहले. 2% if it is more than 20 lakh does not exceed 1 crore. More than 1 crore, 5%. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Then this 2%, 5% story will come if you have not furnished returns for all the 3 assessment year relevant to the previous year. If you have furnished returns, TDS है तभी भी, पर सिर्फ 2% है. और 2% तभी आएगा अगर मोर देन 1 करोड़ है तो. मतलब शिवा तेजा के लिए मेरे को TDS तभी आएगा इफ आई विड्रॉ कैश मोर देन 1 करोड़. अगर मैं लास्ट 3 years रिटर्न फाइल नहीं किया, TDS will start immediately after 20 lakhs. 20 lakhs to 1 crore 2%, above 1 crore 5%. So in simple terms, to put it, ROI last 3 years, filed, not filed. If it is filed more than 1 crore, क्या बेटा? 2%. Not filed, more than 20 lakh does not exceed 1 crore, 2%. And more than 1 crore, 5%. समझे क्या? Simple terms what I am talking about.
Friends, next, no TDS if payment is made to government, payment is made to another bank or any business correspondent. Last one, I hope you understand. Any white label ATM operator of a banking company. White label ATM operator means there are people whose responsibility, something like CMS service. We call it as cash management service. For example, I've got some trucks which are security vehicles. I'll have a contract with the bank. I'll withdraw cash from the bank and that I'll take to the ATMs. I'll install in the ATMs. समझ गए ना आप लोग? देखे ना ऐसा गाड़ी अभी जो एटीएम में जाता है वो पैसे लगाते हैं फिर बाहर आता है और पिक्चर में ऐसा दिखा देते कि वो जब कार्ड पैसे लगाने जा रहे तब वो आएगा चोरी करेगा वो सब टाइम पास करते बॉलीवुड मूवी में दिखाते बहुत ऐसे गाड़ी उड़ा देते कैश बाहर निकलता है कौन सा मूवी का नाम ही एटीएम है वो वाला क्या ऐसा थोड़ी नाम है ठीक है अरे ठीक है डन जिस दिन मैं एक बार बोला हर बार सुना रहे तुम लोग आप मेरे को ठीक है डन सर क्लियर विद दिस एवरीबॉडी नेक्स्ट 194 लेटेस्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल सुन लो आप फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल सुन लो सर वी ओपन एन ऐप नेम एज स्विगी थ्रू स्विगी वी प्लेस्ड ऑर्डर लेट अस से फ्रॉम वन पर्टिकुलर होटल एक नाम बोलो कुछ तो होटल मथुरा आई ओपन माय स्विगी ऐप आई प्लेस्ड ऑर्डर फ्रॉम होटल मथुरा नाउ टेल मी will I make payment directly to Mathura hotel or will I pay to Swiggy and since Swiggy will pay to Mathura then Swiggy will do something called TDS under income tax now don't get your talent of GST telling sir TDS GSP में भी है ना TCS करके वो GST का है अपन income tax की बात कर रहे हैं 194 don't write anything just listen first e-commerce any person e-commerce operator मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम Swiggy will do TDS to the person who is selling goods services through e-commerce operator कितना परसेंट है 1% बट एक लाइन देखो no TDS if it does not exceed लॉजिक सिंपल है उसका अगर 5 लाख भी नहीं हो रहा है मतलब वो इसका इनकम बेस क्वेश्चन से नीचे है ना तो क्यों करना है TDS छोड़ देना यार 5 लाख लिमिट लगा के सो गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी इंपॉर्टेंट हाईलाइट दैट वर्ड्स So are we clear with this? So what is 194O? E-commerce operator to e-commerce participant. 194N. TDS on cash withdrawals. N beta N. M तो अच्छी जैसी वाला है. N is cash withdrawal. Important है वो. So clear है ना बेटा? Finally 194P my dear friends. Deduction of tax by a specified bank. In case of specified senior citizen. Who is a specified senior citizen? Individual being a resident who's of the age of what? 75 years or more. Actually, when bank is paying interest, they will do TDS at what rate? On FD, क्या रेट करेंगे 10%. इधर क्या बोले देखो, what rate they'll do? Slab rate. Point number 1. Specified senior citizen is exempted from filing return of income in which tax has been deducted. अगर TDS हो गया तो भाई तू रिटर्न फाइल मत कर किसको एप्लीकेबल है 75 years or more मजाक थोड़ी है an individual being a resident who 75 years or more is having what income pension income and no other income except interest income received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving pension income and has furnished what
declaration to the bank containing particulars in the prescribed form and verified in the prescribed manner. तो बैंक वाला TDS 10% नहीं करेगा, क्या रेट पे करेगा? और बैंक वाला अगर स्लैब रेट पे कर दिया तो गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तू रिटर्न फाइल मत कर, एंजॉय कर. वो 75 ईयर्स और मोर है और सिर्फ पेंशन इनकम है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, जैसे बैंक वाला स्लैब रेट पे TDS कर रहा है, फिर क्या उसको रिटर्न फाइल करने परेशान करेंगे उसको? समझ में आ रहा है क्या बेटा? नेक्स्ट सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा एनीवेज, ये तो अपने पता है 87 है रिबेट दोस्तों. नेक्स्ट 194Q extremely important. Listen everybody very clearly my dear friends. I hope you guys remember this. Listen. मतलब शायद आपको याद होगा, नहीं भी है तो सुन लो. Sir, I'm giving a practical example so that you will get a clarity. There is a cement dealer and there is a construction company. From cement dealer, construction company is buying what, sir? Cement. And in the whole financial year, the transactions are more than 50 lakhs. 50 lakhs. And construction company turnover is more than 10 crores. More than what, beta? And when construction company is paying to cement dealer, they should do 0.1% TDS. What percent they have to do? Exactly. Now I have a question. Listen very clearly. I'll tell the point, then I'll ask. That is, there is a cement dealer. Same story. They are supplying cement to whom, sir? They are supplying to a construction company. This fellow turnover is only 9 crores. Will 194Q apply? Answer is no. Because it will apply only when buyer turnover is more than 1 crore. But 10 crores. Cement dealer turnover is 12 crores. Now there is something called TCS under section 206C 1H at the rate of 0.1%. समझ में आ रहा है क्या? Everybody, my dear friends, now listen very clearly. Nothing to worry about. Simple story. Listen very clearly. Transaction value, buyer turnover, seller turnover, last column, TDS or TCS. समझना बेटा? So speak out. Transaction value more than 50 lakh, buyer turnover, let us say buyer turnover more than 10 crores, seller turnover less than 10 crores. क्या आएगा बेटा? TDS more than 50 lakh, buyer turnover less than 10 crores, seller turnover more than 10 crores. Law is telling TCS. दोनों का रेट तो सेम ही है. कितना रेट? 0.1%. Getting clarity? Next. More than 50 lakh, buyer turnover more than 10 crores, seller turnover also more than 10 crores. दोनों भी आएगा ना? But last time दोनों नहीं करो बस, TDS करो. Means TDS will override TCS. सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? Next. Transaction value less than 50 lakh, more than 10 crores, more than 10 crores. No TDS or TCS. There is a relationship between 194Q and 206. There is no place here. I'll write here. 194Q and 206C 1H. I think we got the correlation between these two. So speak out, my dear friends. Very important. Came in exam so many times. Latest amendment. Take it. In the notes, take the summary. और दोनों केस में रेट कितना है बेटा? TDS मतलब we will deduct and give. TCS मतलब we will collect extra amount. ये तो बेसिक पता है ना अपने को.
यस गाइस, फिनिश राइटिंग। यार दोस्तों बोलो, ये 194 की 260 का स्टोरी समझ में आ गया क्या सबको? चलो गेट बैक 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 बैक। Done. 184Q. Highlight that word. 0.1% of the sum exceeding what? 50 lakh. इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है बॉस. If it is 60 lakh, then TDS is only on 10 lakhs. Normally ऐसा होता नहीं ना. If expert is paying me 40,000, TDS will come on 40,000. But this special point. Highlight that. Very important. About exceeding what beta? 50 lakh. So clear no, my dear friends? Everybody, and this will apply only if turnover exceeds what? 10 crores. And see this third point, fourth point, fifth point. If 194Q applies, TDS should run with section 194. Oh, 206C 1H पे आया, 194Q भी आया, 194Q. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Friends, speak out. And if PAN is not available, what rate then? सीधा 5%. 0.1 की जगह 5% सीधा. डेंजर रहता ही ना ऐसा. क्लियर? नेक्स्ट. No TDS when it is paid to government, when it is paid to RBI, there is no question of TDS. Friends, getting clarity? Next. Certificate. Already I told this to you. That is the story of going to AO and asking for lower TDS certificates. Then responsibility. याद है ना ये? 7 days, 30th April. दोस्तों, and this point is important, let me clarify. For 194 IA beta, there is one form called 26QB. 194 IB, there is a form called 26QC. And 194M, there is a form called 26QD. And all these three sections, one important point, let me tell you, that is, there is no need of TAN. Generally, the person doing TDS, I repeat again, generally the person doing TDS should have something called TAN, which stands for tax deduction account number. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? Generally, the person doing TDS should have something called TAN, tax deduction account number. But ये sections में बिना TAN का TDS हो जाएगा. मतलब अपना पैन, उसका पैन, दोनों पैन लेके फाइल करते हैं अपन. ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत. नहीं, आपको ये लिखना है बॉस. नो नीड ऑफ टैन. ये लिखना है हमको. IAI IBM में टैन की जरूरत नहीं है. ये मैं डांस सर क्यों सर? क्यों मतलब यार वो बंदा इंडिविजुअल है, प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, रोज थोड़ी करेगा ये काम. उसको क्या बोल रहे भाई, वो एक ट्रांजैक्शन के लिए टैन क्यों लेता है? तो पैन से ही फाइल कर दे, हो जाएगा. उसको ट्रबल नहीं कर रहे. To make his life more comfortable, they are doing it. I am sure we got a clarity on this point, everybody. Next, ये तो clear है. 24, 26, 27. And there's something called 27 EQ for TCS. And highlight this point, 200 per day, very important. But then already 200 per day late fees. लिखे ऑलरेडी अपन. And this point also important. 1% if TDS is not done, 1.5% if TDS is done but not paid. And TDS returns whatever we file, my dear friends, ये लोग क्या करते हैं, एक साल के अंदर उसको प्रोसेस करते. मतलब कुछ गड़बड़ है तो उसमें नोटिस देते. बहुत से TDS गड़बड़ है, ये रेट गलत है, ये चलान मैच नहीं हो रहा है. They give a notice. Clear, no? That they don't ask in inter-level, because after we file, what will happen? All that is in final. Understood? Certificate 16 है, याद है ना बेटा? Friends, आपको शॉर्टकट याद रखने के लिए Q1 का TDS रिटर्न फाइलिंग कब होगा? 31st. सर्टिफिकेट 15 अगस्त तक देना है. एग्जैक्टली 15 दिन. Q2 का कब तक है? अक्टूबर. 15 नवंबर. Q3 का 15 फरवरी. Q4 का 31st मई. 15th जून. Everywhere they give 15 days time.
I hope you are getting clarity. Next section, guys, 206 AA. If PAN is not there, 20% TDS. याद है ना? बट ये बिल्कुल याद मत रखो, पैन नहीं है तो 20% TDS. आपको याद ये रखना है, पैन नहीं है तो TDS इज नॉर्मल रेट और 20% विच एवर इज हायर. एक एग्जाम एक बार क्वेश्चन आया था, लॉटरी आया एक बंदे को, उसको पेमेंट दे रहे, उसको पैन नहीं है, TDS क्या रेट आएगा? स्टूडेंट लिखा 20%. अरे पागल, 30 और 20 विच एवर इज हायर तो 30 होता है यार. पैन नहीं बोल के तुम कम TDS थोड़ी करोगे यार. यार बेसिक लॉजिक की बात है यार. नेक्स्ट सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट 206 AB. What is the section number, sir? 206. Higher rate of TDS for what? Non-filers of income tax returns. If they are not filing income tax return, then what is the TDS rate, sir? Twice the rate given in the law, or twice the rate in force, or at 5%, whichever is higher. मतलब शिवा तेजा अगर पैन नहीं है मेरे पास तो 20% आएगा. अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं फिर भी मेरा क्या होगा? 20% आएगा. So getting clarity, everybody? All of us. That's it. That is the story of TDS. Generally in exam what they are doing is they give 4 points and ask for 4 mark. Sometimes they are giving 3 points, asking for 6 mark also. 2 marks, एक point. इंटरेस्टिंग है. सब क्लियर है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईजैक है अपना. अगर हाईजैक नहीं मानो तो भाई कॉन्सेप्ट ही गया पूरा. एंड हाईजैक समझ में आया तो तभी तो समझ में आएगा कि ये 194M क्यों आया और ये IB क्यों आया. उलाने का रीजन ही वो इंडिविजुअल HF को उधर अप्लाई नहीं होता. समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट फाइनली TCS, पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इज लेस बट स्टिल लेट अस सी दैट. व्हाट इज दैट वर्ड, सर? TCS. व्हाट इज TCS? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. Every person who grants lease or license or enters into contract or transfers any right or interest in any what, sir? Parking lot or toll plaza or a mine or quarry. TCS rate कितना है बेटा? 2%. Alcohol liquor, ये टाइम पास देखो इधर. Alcohol liquor 1%, scrap 1%, minerals 1%, tendu leaves. Tendu is your tobacco leaves. क्या रेट है बेटा? 5%. Now see over action. Timber obtained under forest lease 2.5%, other than forest lease 2.5%. Any of the forest produce not timber tendu 2.5%. क्या टाइम पास है यार? पूरे टिम्बर 2.5%, tendu 5%. सब क्लियर है फ्रेंड्स? Everybody getting clarity? This section is very important. Very practical. Imagine Amit sir is buying one car for 1 crore. The seller will not take 1 crore from Amit sir. He will take 1 crore 1 lakh. Because whenever there is a sale of car exceeding 10 lakh, there is a TCS at the rate of 1%. Very important. Came in exam 2-3 times. कोई भी गाड़ी. Is that clear? Friends, getting clarity, everybody? Sir, now see one important point. This came in exam in last attempt. Please see that. No TCS if the buyer furnishes to the person responsible for collecting tax a declaration in writing in duplicate that the above kya? Alcohol, liquor, slab, minerals, tendu leaves and all are being utilized for the purpose of what? Manufacturing, processing or producing articles or thing, or for generation of power and not for trading. But whatever he purchase is not for selling, it's only for manufacturing. Then TCS will not apply. Exam आया था एक बार. समझ में आ रहा है बेटा? Friends, getting clarity, everybody? दोस्तों, next 206C1G. See here, authorized dealer who receives amount under what, sir? Liberalized remittance scheme. इंडिया से बाहर पैसे भेज रहे और overseas tour program package, foreign tour. What is the TCS rate, sir? 5%. And see here one point, where the amount is remitted for the purpose other than tour program, the TCS is nil.
and the amount of the aggregate amount is less than 7 lakhs. Second case you see, for other than tour program and it's more than 7 lakh, what is the rate, sir? But you see the word of amount in excess of 7 lakhs. मतलब 5% है TCS. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Speak out, my dear friends. Next point you see, amount being remitted out is a loan obtained from a financial institution as defined in ATE for a purpose of any education. For example, Divya is going to foreign, father has taken a loan, educational loan, and educational loan जो इंडिया में लिए वो पैसा बाहर बेचेंगे ना यार, एक्स्ट्रा 0.5% लेंगे, 5% नहीं, 0.5%. अगर एजुकेशनल लोन का पैसा है तो, दूसरा पैसा है तो 5%. समझ में आ रहा है क्या बेटा? स्पीक आउट एवरीबॉडी. सर, and when the buyer is a government, central government, state government, high commission, consulate, ये सब केसेस में ऑब्वियसली वो लोग चार्ज नहीं करते TCS when the buyer is government. Friends, 206C1G would not apply to individual who is not a resident in India and who is only what, sir? Visiting India. Somebody who is not a resident in India who just came for a visit in India and is going out. तो प्रॉब्लम नहीं है, ये अप्लाई नहीं करेंगे. 7 लाख नहीं भाई, 50 लाख लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अगर उसके पास से TCS लिए 5% या 0.5%, वो पैसे तो उसको गया ना, वो थोड़ी इंडिया में रिटर्न फाइल करके क्लेम करेगा TCS क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल मेरा कजिन है यूएस लंदन में, अगर मैं उसको 10 लाख भेजना चाह रहा हूँ, इफ आई वांट टू सेंड 10 lakhs to him, बैंक विल कलेक्ट एक्स्ट्रा 5% फ्रॉम मी. बट आई नो प्रॉब्लम बिकॉज दैट विल कम बैक टू माय TCS क्रेडिट. नो, ऐसे थोड़ी है कि लॉस हो रहा है. बट मैं अगर इंडिया का बंदा हुए नहीं, ऐसे इंडिया देखने आया, देन इफ दे कलेक्ट इट्स रॉन्ग. नो. नेक्स्ट 206C1H. बॉस अभी बात करें हम 50 लाख के ऊपर 0.1%, याद है ना बेटा? Friends, and if PAN is not provided, higher TCS, twice the rate or 5%, whichever is higher. And whatever TCS they collect, they will pay to the government by 7th of next month. Of course, no doubt about it. Clear, my dear friends? Generally in exam, what they are doing is, they are giving 4 points from TDS, asking for 4 mark. Or sometimes 3 points from TDS, 1 point from TCS. They are doing a mix and match. Clear, my dear friends? Not a big thing as such, something very comfortable only, but just that you should have a clarity on the subject. 194R, a latest section made by Finance Act 22. And Finance Act 22 आने के बाद first exam is May 23 exam. इसका example दूं क्या? Imagine there is a video blogger who is a YouTuber who is doing YouTube videos. ठीक है ना? वो वीडियो कर रहा है unboxing of a cell phone, something like that. And Samsung company gave him a phone telling you do a video on unboxing of this phone. And also told him, जो phone तो unbox किया, वो तू रख ले. Is it not a perquisite for that guy? Everybody, yes or no, sir? Law is telling will apply TDS. Under one section called 194R. See here, what is the value, what is the rate of TDS? 10% of the value or aggregate value of benefit. And the limit कितना है बेटा? Limit कितना है? That means if the phone is less than 20,000, they will not do TDS. जो एंजॉय कर रहे हैं उसको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, बट TDS तो नहीं आएगा. Sir, if expert is paying me less than 30,000, will they do TDS? But I should still pay tax, no? Tax is different, TDS is different. Don't combine those two. Are we getting clarity, everybody? Speak out. Latest amendment. Next, 194S. ये तो मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं आएगा, और फिर भी देख लो. क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट. TDS is what rate? 1%. And the limit is what? 10,000. So getting clarity? And the limit is 50,000. Don't be surprised again. This is only for individual HUF whose turnover does not exceed 1 crore or 50 lakh. 1 crore 50 lakh story पता है ना आपने को? Friends, everybody, 194S तो पता नहीं, but 194R तो बहुत important है. R is what? Perquisite.
TDS or any benefit or perquisite given. Are we getting clarity on this point, everybody? Friends, speak out. So these are the various provisions of TDS, TCS, which already a lot of them we discussed before only, but some points I wanted to cover up so that we will not miss out on any point. Getting clarity, everybody? And before exam, it's important that you have to go through TDS, TCS, because almost every time questions coming in the exam. Almost every time. पक्का क्लियर? और ये 194Q क्या 206C 1H का दोनों का रिलेशन समझ में आ गया ना? एवरीबॉडी. और दोनों में एप्लीकेबल है तो क्या करेंगे? TDS करेंगे. और TDS कब आएगा? अगर टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है. अगर 10 करोड़ के नीचे है, सेलर का 10 करोड़ के ऊपर है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली वो केस मिस हो गया उसमें. 50 लाख के ऊपर है, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, तभी भी TDS नहीं आएगा, TCS नहीं आएगा. क्या वो डिस्कस कर रहे थे क्या? वो भी ऐसा, वो भी केस हो सकता है ना दोस्तों. दोनों का 10 करोड़ के नीचे है तो TDS TCS दोनों में नहीं आता. अगर 50 लाख के ऊपर है तो भी. और TDS किस पे एप्लीकेबल है? मतलब 50 लाख के ऊपर, याद रख लो. ये अगर 55 लाख से तो TDS किस पे आएगा? सिर्फ 5 लाख पे आएगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? दैट्स इट. दैट इज द स्टोरी ऑफ आवर TDS and TCS. But before I close the class, I want to discuss a couple of things. Before that, after that only I'll complete this. Listen. First thing I want to discuss is there is something called Section 10AA. This is exemption for units which are set up in what beta? Special economic zone. Basically, what is an SEZ? It's in areas which are notified by the government, where government is welcoming foreign companies, telling, boss, you come to India, set up unit in SEZ, we'll give you exemption. And this story was happening till 2010. अभी नहीं है कुछ भी. समझ में आया क्या बेटा? स्पीक आउट. बट जो पहले सेटअप करे उसको तो अभी चल रहा है ना. स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. एंड व्हाट एग्जाम्पशन 2010 के बाद थोड़ा एक्सटेंड किए, बट अभी तो बंद कर दिए. व्हाट एग्जाम्पशन दे गिव इज प्रॉफिट्स इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. दैट मींस जो डोमेस्टिक टर्नओवर है उसका कोई एग्जाम्पशन नहीं है. एग्जाम्पशन कितना हद तक है? ओनली व्हाट आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट टर्नओवर. एंड व्हाट दे टोल्ड इज फर्स्ट 5 years स्ट्रेट अवे, आपको याद है अच्छे से, गुड, 100% exempt. 100% of what? This formula. Next 5 years, good, very good, 50% is exempt. And last 5 years, maximum 50%, depending upon amount transferred to SEZ, reinvestment, reserve account. Maximum 50% देंगे, but depending upon how much you transfer to SEZ reinvestment reserve account. And the point what they told in the law is that this reserve account should be utilized for purchase of plant and machinery within 3 years. ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बना रहे रिजर्व. आप प्लांट एंड मशीनरी परचेस करो, वो भी 3 साल के अंदर. Aditya, if income is exempt, can we claim expenditure as deduction? That is a straight point. एग्जाम एक बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए. इनकम एग्जाम था, एक्सपेंस मिलेगा क्या? कैसा मिल सकता है? इनकम इज एग्जाम, हाउ कैन वी क्लेम एक्सपेंसेस? Is that done?
Go to your material, open exemptions chapter once. So see this once. First 5 years, kitna percent beta? Page 23. 100%. Next 5 years. Next 5 years, so much of amount not exceeding 50% of the profits as debited to P&L account, and what we transfer to a CZ what account? Reinvestment reserve account. And exemption is only for profits into export turnover divided by total turnover. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everybody come on, please reply. And you have to buy new plant and machinery within how many years? Exactly. Are you getting clarity? And as I just told, expense whatever you incur in relation to exempt income, that anyways you can't take deduction. And lot told whatever direct relatable, that direct figure you take, plus amount equal to 1% of annual average of monthly average. That means what I'm trying to say is that, sir, there are some investments what you made. Okay? On these investments, you got some income, which is exempt. When it's exempt, you're not paying any tax. Then law is telling whatever expense directly related to this, don't take it. And also, what you have to add to this is 1% of, check the figure of monthly average of investment, opening plus closing by 2. And that monthly average, you again take annual average of that figure 1%. Read that word here. An amount equal to 1% of what? Annual average of monthly average of opening and closing balance of the investment, which does not form part of total income. अगर इनकम exempt है तो तभी ये स्टोरी आएगा. अगर इनकम टैक्सेबल है तो ये स्टोरी नहीं आएगा दोस्त. समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये सब स्टोरी कब आएगा? अगर इनकम exempt है. अगर इनकम टैक्सेबल है तो नो प्रॉब्लम बॉस. इफ इनकम इज टैक्सेबल, whatever is your expense related to exempt income, take the deduction, no problem. Who will stop? Friends, getting clarity? Everybody, sir? Good. Did you write 10AA section, this formula you wrote, sir? दोस्तों बोलो. Just open this material. Hold on. सर 10AA लिखे ना, उसमें एक नोट लिखो नीचे. Unit should have been started in SCZ. Unit should have been started in SCZ. Unit should have been started in SCZ between AY 67, AY what beta? 67 to AY 2021. मतलब अभी जो स्टार्ट करेगा तो उसको मिलेगा नहीं, बट जो पहले स्टार्ट किया उसको तो मिल जाएगा ना यार, उसके लिए रिलेवेंट है ये. AY 2021. सर टेल मी वन पॉइंट. AY 2021 मतलब PY कौन सा है? 1920. 1920 का लास्ट डेट क्या है? 31 March 2020. इसमें एक पॉइंट है. 1920 is 31 March 2020, no? What point they told is, if approval is there before 31 March 2020 and you started before 31 March 21, no problem, they told still take exemption. समझे क्या बेटा? एक नोट लिखो और एक पॉइंट. If approval is issued, write one note. If approval is issued on or before 31st March 2020, if approval is issued on or before 31st March 2020, then the date for
then the date for commencement of activities has been extended to 31st March 2021. That is, it is deemed that, continue. That is, it is deemed that activities have begun. It is deemed that activities have begun, not begun, during AY, कौन सा AY? 2021. Actually, 2021 start नहीं हुआ, but it is deemed as if we started during that time. ये relaxation benefit है ना बेटा ये? Friends, speak out. That's the story of which section, my dear friends? 10AA. Dealing with what? SCZ. Are we getting clarity, everybody? Friends, please reply. Now, finally, my dear friends, let me talk about one interesting section called JJAA, which is there in deductions. JJAA. Rarely came in exam, but still that rare could be our attempt only. अरे फैक्ट भी बताना चाहिए ना आपको. Reality, let's talk. There is no question of fear. चलो, it is JJAA. First, let me explain, then we'll see that. एक बार सुन लो पहले, फिर उसको देखते हैं. Sir, JJAA is basically for employment of new workmen. इनका फंडा क्या है? Logic is very simple. They told this section is applicable only to an assessee who is tax audit case. मतलब इसका टर्नओवर करोड़ के ऊपर है या 50 लाख के ऊपर है, सिर्फ उसी को applicable है. He has employed new workmen. He is promoting employment. No, law is telling जितना आप सैलरी पे करोगे एम्प्लॉयज को, वो तो पीएनएल में कैसे भी दिखाएंगे आप. उसके साथ साथ जितना सैलरी नया लोगों को दे रहे उसका इंटू 30%, उसका मैं बोल दूंगा सब इंटू 35%, वो डिडक्शन हम 80 JJAA के अंदर देंगे. ऐसा हम आपको 3 साल देंगे, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1, एम्प्लॉय वही एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 25,000 के नीचे है. एम्प्लॉय वही एम्प्लॉय है जो पार्ट टाइम वाला नहीं है, फुल टाइम वाला है. एम्प्लॉय वही एम्प्लॉय है जो कम से कम 240 दिन काम किया. अगर लेदर इंडस्ट्री वाले केसेस है तो 150 डेज, वरना 240 डेज. समझ में आ रहा है क्या बेटा? Speak out, my dear friends. And the payment to that employee should have been made by account paycheck online and all. Cash नहीं. देखो अभी ये किसको applicable है? सिर्फ 44AB वाले को, टैक्स वाले को. कितना डिडक्शन है? 30% ऑफ व्हाट? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसको नया स्टार्ट किए. समझ में आ रहा ना बेटा? एंड एडिशनल का मतलब क्या है? नया बनना चाहिए. आप इमेजिन करो सर, आपके पास 100 एम्प्लॉय से 10 लोगों को निकाल दिए और 10 लोगों को ऐड किए. लॉ बोल रहे भाई कुछ बढ़े ही नहीं, देयर शुड बी इंक्रीज. अरे 10 को निकाल 10 को ऐड करे तो फिर हर बंदा यही करेगा. जो 10 है उसको बोलेगा 10 भाई तू आज निकल जा, वापस 1 अप्रैल को ज्वाइन कर. देयर शुड बी इंक्रीज, नो माय डियर फ्रेंड्स. एंड दे आर पेड ओनली बाय व्हाट? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ऑनलाइन ट्रांसफर. समझ में आ रहा है क्या बेटा? स्पीक आउट. एंड हु इज नॉट कवर्ड? Whose salary is more than 25,000. He is not covered. Second, employee for whom entire contribution is paid by the government under Employee Pension Scheme notified under accordance with Provident Fund Miscellaneous Provisions Act. Government ही पे कर रहे उसका Provident Fund, भाई तेरे को ये deduction नहीं देंगे. Third, employee who is not participating in RPF, he is also not covered. And is working for less than, and in case of an assessee in the business of manufacturing of apparel, clothes or footwear or leather products, कितना days है? So getting clarity? Speak out. Everybody, deduction कितना है? 30%. How many years? 3 years. Are we getting clarity? Everybody, sir. Let's see one example. 350 नया एम्प्लॉयज को लिए. कितना एम्प्लॉयज को लिए? See the year.
आउट ऑफ द 350 का स्टोरी ये है. पहले 1422 को लिए रेगुलर एम्प्लॉय. सर रेगुलर कैजुअल, इसको तो इग्नोर ही करो. सेकेंड वाले को भी इग्नोर करो. क्यों? कितना है ये? 26,000. थर्ड वाले को भी इग्नोर करेंगे. क्यों? ये 19/20/22 है. मतलब क्या है? लेस देन 240 डेज. सर समझ में आ रहा है क्या स्टोरी? जब 19/22 है मतलब लेस देन 240 डेज है ना, तो ये गया. सेकंड व थर्ड वाला गया क्योंकि कैजुअल है. सेकंड वाला गया क्योंकि 25,000 के ऊपर है. फर्स्ट वाले का ही मिलेगा. 24,000 इंटू 12 months इंटू 75 एम्प्लॉइज इंटू 30%. बराबर है ना बेटा? स्पीक आउट. क्या 64 lakhs? ठीक है सर. ये लाइन देखो अभी. रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ while the casual employees do not. मतलब कैजुअल एम्प्लॉय आरपीएफ में नहीं आ रहे मतलब उसको कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट, compute deduction if any available to a, already we discussed. And if the profits and gains is 75 lakh, turnover 10.16 crores. वो भी इंपॉर्टेंट है यार. मतलब टैक्स रेट वाला है. अगर टैक्स रेट वाला है ही नहीं तो सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता ना यार. नीचे एक लाइन देखो. What would be your answer if A has come as manufacturer of footwear? भाई अगर फुटवेयर है तो हम इसको भी लेंगे. क्यों? ये 150 डेज बन जाता ना, तो अब ये भी आएगा ना. फिर अगर ये भी आएगा तो क्या करेंगे? 24,000 इंटू 12 नहीं है, सितंबर है ना. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हाउ मेनी मंथ्स? 7 months इंटू 100 एम्प्लॉइज इंटू 30%. यार समझ में आ रहा है क्या? ये देखो पहला आंसर क्या आया था आपको? 64,80,000. दूसरा केस में फुटवेयर वाले में ये देखो, ये क्या है? 2 crore 16 lakhs किधर से आया? अच्छा वो पहले वाला वही था क्या? 2 crore 16 पे 30% आया क्या? हाँ बराबर है ना. अरे यार प्लस 24,000 into 7 into 100, ये जो फिगर है उसका 30%. 2 minutes, just close the door. 2 minutes, just wait for 5 minutes. Close the door. 5 minutes. Sir, are we clear with this point? Everybody, सबको समझ में आया क्या बेटा? Just close the door. Friends, are we clear with this point? Everybody, I repeat once again. JJAA किसको applicable है? Associate tax audit, and there should be increase in number of वो एम्प्लॉयज को जितना सैलरी पे कर रहे हैं इंटू 30%. अगर सैलरी अकाउंट पे चेक से पे कर रहे हैं वो भी कंडीशन है, या ऑनलाइन ट्रांसफर. और उसका सैलरी कितना रहना चाहिए? 25,000 के नीचे. और वो पीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. और क्या 25,000 क्या वो सैलरी है, बट इट डज नॉट कवर कॉन्ट्रीब्यूशन पेड, लमसम पेमेंट लाइक ग्रेचुइटी, ये सब नहीं आएगा उसमें. क्या नहीं? वो सैलरी है. टोटल एम्प्लॉय मतलब टोटल सैलरी. यस पूरा. So getting clarity? And is not participating in RPF and is working for less than how many days? तो आए क्यों फिर? अरे क्या अरे ये बाद में रख सकता ना. ये ऐसे बुक रख के कैसे आए? ऐसे क्या क्या Get back is sorry. Bite 2 minutes. Come on. Which section we're talking? 80 JJAA. It's applicable to whom? Assessee who is engaged in tax audits. ये वाला first condition है. दूसरा, there should be increase in number of employees. Whatever employee salary we are paying, that into 30%. कितने साल मिलेगा ऐसा? 3 साल benefit मिलेगा ऐसा. And this covers only that employees who are participating in provident fund and whose salary is less than 25,000 and working for at least 240 days. 150 days in case of apparel, footwear, leather industry, manufacturing. That is also, of course, वो भी important है. वो भी highlight करता हूं मैं. Manufacturing. इसका लॉजिक क्या है बोलो? वो सीजनल काम करते. ये फुटवेयर एपरल वाले पूरा साल काम नहीं करते. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले हैं ये लोग साल में 5-6 महीने ही काम करते और पूरे नया चीजें निकालते हैं और बस रिलैक्स. मार्केट में वही ट्रेंड चलता है. गेटिंग क्लैरिटी?
That is the story of ATJJAA. Vedant bhai, happy? Good. So are we clear with this, everybody? Friends, please reply, my dear friends. यार कुछ तो बोलो यार, जवाब दो बेटा. Yes, my dear friend. Salary? Exactly 25,000. Very good question. Here there is one word which they clearly wrote, that is exclusions whose salary is more than 25,000. मतलब exact 25 तो क्या चलेगा, deduction आएगा. Good. So friends, with that discussion, my dear friends, we are done with basic concepts, residential status, agricultural income, incomes exempt from tax, and all your 5 heads of income, clubbing, set off, carry forward, deductions is done, return of income is done, TDS is done, advance tax is done, total income is also done. I'm sure all these points make sense for everybody, sir. Come on, my dear friends, please reply all of us. Sabko ye concepts clear, everybody? Just give me 2 minutes now. I'll come discuss something, then we'll close. Sir, there is something called AMT, which stands for alternate minimum tax. This is applicable only to the assessee who claimed section 10AA, or who is claiming 35AD, or who is claiming 80 QQB or 80 RRB. और भी बहुत सेक्शन है, IA, IB, IC, ID, IE करके, पर वो सब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं वो सेक्शंस. What law told? आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करो, जो नॉर्मली आप टैक्स निकालते वो करो, ठीक है ना बेटा. अलग से आप क्या करो, एएमटी निकालो. कैसे एएमटी निकालेंगे? गेट योर टोटल इनकम फिगर, यू एड बैक सेक्शन 10AA, यू एड बैक 35AD माइनस डेप्रिसिएशन, कुछ फिगर आएगा. 35AD लिए उसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लेना बेटा. एंड यू ऑल्सो एड बैक 80 QQB deduction what you took. You also add back 80 RRB deduction what you took. इससे आपको क्या आएगा? That is called adjusted total income. Adjusted, and this section will apply only when adjusted total income is more than 20 lakhs. And on this ATI, you calculate tax, that is AMT, at the rate of 18.5%. And law told one interesting line now. If normal is more than AMT, law told please pay what beta? Normal. And if normal is less than AMT, law is telling please pay what beta? AMT. And the balance you take it as AMT credit. AMT what beta? Credits, which you can carry forward for a period of 15 years. और सेट ऑफ कब करेंगे? जिस साल में नॉर्मल ज्यादा है, एएमटी कम है, तब सेट ऑफ कर. मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, भाई मेरे को इतना मिनिमम टैक्स चाहिए, अगर तेरा नॉर्मल ज्यादा निकला तो वो पे कर, नॉर्मल कम निकला तो एएमटी मुझे पे कर, जो तो एक्स्ट्रा पे कर रहा ना मैं तेरा क्रेडिट दूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर 15 साल तक. जिस दिन तेरा नॉर्मल ज्यादा रहेगा तब सेट ऑफ कर. समझ ले, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, ज्यादा पैसे ले रहे, कैरी फॉरवर्ड दे रहे. This concept is called what? AMT, which is given by section 115 JC. Balance is AMT credit. So these all points, what happens is, generally they don't come in the exam, but suddenly they come as a flash. We should not become blank. That's the reason why I don't want to leave it just like that. इतना मेहनत करे तो यार लास्ट में 5-10 मिनट में क्या जा रहा है लाइफ में, ठीक है ना यार. अगर 5-10 मिनट स्पेंड करने से अगर बाई चांस 2 मार्क भी एग्जाम में आ गया, इट्स वर्थ इट. डन नो माय डियर फ्रेंड्स. चलो, let me take you back to one last point to discuss. क्या बेटा? Yes. बने दिख रहा है.
So finally, my dear friends, let me talk about something called Section 115 BAC. याद है ना बेटा? Which is applicable only to individual or HUF. इसमें what they have done is they gave tax rates less, but they told what? Forget Chapter 6A. Forget standard deduction in case of what? Salaries. Forget 24B. Forget exemption for allowances. Allowances का जो exemption रहेगा, except that 3,200, वो तो मिलेगा. 3,200 blind, disabled, handicapped, वो तो आएगा डिफरेंट. अब बाकी कोई भी नहीं आएगा. समझ में आ रहा है क्या? इतना सब एग्जाम्शन पूरा उठा रहे और बोल रहे भाई टैक्स रेट कम है. किसको काम आता है? उसी को काम आता है जिसको चैप्टर 6 से नहीं है, और जिसको चैप्टर 6 से है और 24 भी है उसके लिए नॉनसेंस है. बोलो बेटा क्या है टैक्स रेट्स? कुछ आइडिया है? अप टू बोलो बेटा 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, then 5 to 7.5 lakhs 10%. वेरी गुड. 2.5 लाख बढ़ाते जाओ और ये 5% एग्जैक्टली. देन 10 lakhs to 12.5 lakhs 20%, 12.5 lakhs to 15 lakhs at the rate of 25%, above 15 lakhs 30%. And my humble suggestion to you, don't learn the latest budget amendments. वो आपको एप्लीकेबल नहीं है. उसमें बहुत कुछ बोले वो लोग कि सरचार्ज का रेट कम है, वो है ये करके, वो सब आपको रिलेवेंट नहीं है. फाइनेंस एक्ट 23 is not relevant for May 23, November 23 exam, and I strongly believe that you will pass in your attempt only. That you study only for final. ठीक है ना? जो लेटेस्ट बजट में वो इग्नोर करो आप. इसमें बहुत चेंजेस करें. और बेसिकली क्या है, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिस इज कॉल्ड न्यू रिजिम. दिस इज कॉल्ड व्हाट रिजिम? न्यू रिजिम. उन्होंने क्या किया, अभी वो क्या बोल रहे हैं, जो पुराना वाला है उसको न्यू बोल रहा है, इसको ओल्ड बोल रहा है. ऐसा बोल रहे हैं बजट में. मतलब वो डिफॉल्ट हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया. एंड फॉरगेट ऑल दैट बजट अमेंडमेंट्स, फॉर अस रिलेवेंट नहीं है, तो दिमाग मत चला उस पर. ठीक है ना बेटा? सबको क्लियर है ये सब? Everybody, my dear friends, lovely man, good. So with this, my dear friends, I'll complete the discussion of our income tax, our revision, or the effort what we have taken in last 17 lectures. Today is our 17th lecture, and some days we have spent more time. And thanks for all the time and effort what you guys have given. And I'm pretty confident and sure that with whatever time we spent, we could actually revise the complete income tax. At the same time, whatever concepts where we were lacking, we got a grip and command over things. Especially the reason being very clear that sir, 2-3-4 महीने हो चुके आपका कोचिंग खत्म करके, so obviously it makes a difference when it comes to revision batch. Sometimes what happens is the moment we see that, immediately we'll flash, हाँ, ये तो पता है. And some things will look completely new. Not that you don't know, you already know, but the brain already lost it. So it takes time for the brain to activate it. And there could be some concepts which you would have not learned properly in revision batch, and now you felt very good and comfortable with respect to the conceptual clarity. And I strongly believe that your time and effort was worth spending here. Clear, guys? So thank you so very much, guys. Wish you all the very best and wish you all success. Do perform extremely well. Of course, we are there at the back of you till your exam. Till the day of exam, whatever doubts you get, including the day of exam, except examination timing, whatever doubts you get, I'll be more than happy to help you out and support you guys. You guys have my number. You can happily message me anytime. I'll be more than happy to reply back to your doubts. Clear, my dear friends? And with the knowledge what we gain, any material, any book, any question, you can happily solve without any second thought. And my humble suggestion to you is that when you're coming more close to the exam, it is important that you at least do last 2 years RTPs, MTPs, so that you'll be solving 4 papers. 4 RTPs, 4 MTPs. Technically, you're solving 8 papers, boss, which is way too good. And total income questions, already PGBP, so many questions we discussed in the class. But my suggestion to you is that when you look at RTP, MTP, take 1-2 questions, you solve by yourself. Don't read. If you read, will not become perfect. Try to solve. When you solve it, you get that level of confidence and you become really perfect with the subject. And any doubts you get, I'm always there to help you out. Clear, my dear friends? Wonderful. Thank you so very much, my dear friends. Take care. See you all very, very soon. Thank you.
Thank you so much, online guys. Take care. Bye-bye.